बाजार की बात, लेकिन कॉर्पोरेट कनेक्शन में अब चर्चा करेंगे हमारे आज के मैनेजमेंट से। आज बात होने वाली है L&T इन्फोटेक के टॉप मैनेजमेंट से। कंपनी Q3 में उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश कर चुकी है। नतीजों पर बातचीत के लिए हमसे जुड़ रहे हैं कंपनी के MD और CEO संजय जालोना। साथ ही साथ फंडामेंटल एक्सपर्ट से भी कंपनी के शेयर पर राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको L&T इन्फोटेक के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो 1997 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की ये सब्सिडियरी कंपनी है। टेक कंसल्टिंग और डिजिटल सॉल्यूशंस का बिजनेस है इस कंपनी का, और 33 देशों में ये सर्विसेज देती है। 450 से ऊपर इसके क्लाइंट्स हैं। इंटरनेट, मीडिया, एनर्जी, यूटिलिटी, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ये सर्विस मुहैया करवाती है। और L&T इन्फोटेक के CEO और MD संजय जालोना से मेरी सहयोगी अनीशा जैन ने ये एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनते हैं। L&T इन्फोटेक के थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग आए हैं। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ बेस्ट मोमेंटम पे है जब से लिस्टिंग हुई है कंपनी के। अभी हम मैनेजमेंट से बात करते हैं कि ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन हो सकता है या नहीं। मिस्टर संजय जलोना, CEO of the company, is joining us to tell us whether this kind of growth momentum of 20-25% ये सस्टेन होगा FY23 में और नेक्स्ट 3 से 5 साल में या नहीं। मिस्टर जलोना, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डिमांड के बारे में बताइए कि 3 से 5 साल तक क्या ऐसा ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है कि 20% ग्रोथ? So rather than talking about growth percentages, I want to give you a flavor of कि demand कैसा है और कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। I think इस समय world is operating very differently than हमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि वर्ल्ड फॉर एन एक्सटेंडेड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह से ऑपरेट करेगा। कि एक तरीका तो देखने का है, हमारे पास 45,000 लोग हैं और 45,000 ऑफिसेज भी हैं, बिकॉज एवरीवन इज ऑपरेटिंग लिटरली फ्रॉम देयर होम्स. So the customers who are addressing consumers, they are also feeling a bank, nobody is walking into a bank, lots of bank branches are shut, and you need to find ways to engage ये population को engage करना पड़ेगा. It's not only millennials that operated on phones and tablets. Even my grandparents have to operate this because there is no other way to operate in the new normal. और इन सब चीजों के लिए technology is the one which is coming to be a savior. That's why अभी जो दिखता है कि lots of digital transformation, and they say COVID has expedited and put steroids on digital transformation spend and journeys that customers are and companies are taking. इसीलिए I think there's a lot of demand, what we call as great restructuring, because future of work, workforce, workplace. As an example, पहले लोग people used to move to where the work was. Now in this new scenario, work is moving to where people are. And this is a fundamental change in the world, the way businesses are being done. The way sourcing used to happen in our industry used to be sourcing for scale. कोई कंपनी कितने जल्दी स्केल कर सकती है गुड टैलेंट. आई थिंक इन टुडेज टाइम, because digital transformation is very vertical centric and technology centric, it's being sourcing for expertise now. And this is where companies which have the courage and the character to focus on fewer things, build capabilities disproportionately in the market, will find themselves having incredible conversations with the companies. And that is the demand. हम लोगों को लग रहा है that next 3 to 5 years that demand will continue and we need to continue to capture it. ठीक है, डिमांड मोमेंटम 3 से 5 साल के लिए अच्छा लग रहा है, बट क्या ये अच्छे मार्जिन के साथ आएगा? क्या प्राइसिंग पावर इंप्रूव हो रहा है और ये मार्जिन फिगर का क्या सस्टेनेबल रह सकता है? देखिए, जब भी सप्लाई और डिमांड की बात होती है, और सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो दिस इज अ ग्रेट टाइम टू इंक्रीज प्राइसेस. बट व्हाट वी आर सीइंग इज प्राइस पॉइंट्स आर मोर और लेस स्टेबल. You have opportunities to increase prices as well, but obviously the employees are also coming at a higher price point because of lack of supply. So I think the revenue productivity will continue on similar grounds. The profitability will continue on similar grounds. For us, हम अपने को ग्रोथ कंपनी मानते हैं. हमारा फोकस दारोमदार सब रहता है कि हम कैसे ग्रोथ को ड्राइव करें, and keeping the margin in stable band of 14 to 15% net income. What it allows us, higher growth allows us to get higher margin. Growth is the biggest driver for margin expansion. जब वो होता है,
higher margin, we funnel it back into business, build greater capabilities. When you build greater capabilities, again drives back growth. So it's a virtuous cycle सा बन जाता है of driving higher growth, margin expansion, building capabilities, and just continues there. And that's the philosophy based on which we are confident that we will be able to keep the margin between 14 to 15% band and drive growth. तो L&T इन्फोटेक का मैनेजमेंट बताते हुए किस तरह